And let's also begin with all the coverage related to the Ram Mandir. Remember, as the country is awaiting, and we are just days away from that big Ram Mandir consecration that happens on the 22nd, politicians being politicians will continue to fearmonger. Now, the latest one to do so is Asaduddin Owaisi, who continues to say that this is not what India has been waiting for, and he in fact also goes on to say that the people of the Muslim community must beware and they must protect their mosques. मस्जिदों की हिफाजत करिए। मौजूदा दौर में जो हुक्मरान हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मस्जिदों को गैराबाद कर दिया जाए, मस्जिदों की अहमियत को कम करके रख दिया जाए, मुसलमानों को इस्लाम से दूर कर दिया जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मस्जिदों की हिफाजत करें। और कुदरत हम और आपसे पुकार कर कह रही है कि तुम एक मस्जिद को खो चुके, वो तुम्हारी गफलत की वजह से हुआ था। अगर आप होश के नाखून नहीं लेंगे तो फिर ये तमाम जो लोग आज इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले हैं, ये जालिम लोग, ये हमारी मस्जिदों पर ललचाई हुई नजरों से देख रहे हैं। वो जानते हैं कि मुसलमान को मस्जिद से दूर कर दो, फिर ये निहत्ता हो जाएगा। तो इसलिए बहुत जरूरी है मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों और माँ बाप, अकेले मत जाइए मस्जिद को, अपनी औलाद को साथ लेकर जाइए। सिर्फ जुमे के दिन नहीं बल्कि हर वक्त की नमाज मस्जिदों में अदा करिए, अपने मस्जिदों को आबाद रखिए, दीन इस्लाम पर फख्र करिए, कुरान और सुन्नत पर अमल करिए, अपने इख्तिलाफात को बाजू रखिए। ये वक्त उन ताकतों से मुकाबला हम कर रहे हैं जो हमारे वजूद को मिटाना चाहते हैं इस मुल्क से। ओवैसी ने जिस प्रकार से राम मंदिर को लेकर के लोगों को भड़काना शुरू किया है, मस्जिदों के बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू किया है, तो आप खूंखार हो जाइए, आप अपनी मस्जिदों को बचा लीजिए। बात ये नहीं है कि मस्जिद की, बात ये है कि बाहर से हमलावरों ने आकर के मस्जिदों को तोड़ा। आज अगर राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है तो उसका पुनर्उद्धार, तो इस मामले में इस प्रकार के बयान देकर के वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जिस दिन देश का मुसलमान ये समझना शुरू कर देगा कि बाबर हमलावर था, ना कि इनका पुरखा था, तब इनको खुद ब खुद समझ आने लगेगा। श्री असदुद्दीन ओवैसी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग धर्मों, अलग अलग मजहबों के लोगों के बीच में दूरी पैदा करने की असदुद्दीन ओवैसी साहब कोशिश और साजिश कर रहे हैं। ये उनकी साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। हमारा देश 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का देश है। यहाँ रहने वाला हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, जैन है, पारसी है या बौद्ध है, सब आपस में भाई भाई हैं। हम सब मिलकर रहते हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब का मिशन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन हमारे देश के अंदर कुछ ऐसे सियासतदान हैं, कुछ ऐसे राजनीतिक दलों के नेता हैं जो मजहब के नाम पर लड़ाई झगड़ा करके फसाद खड़ा करना चाहते हैं देश में और अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। श्री असदुद्दीन ओवैसी भी उनमें से एक है। उनको पूरा हिंदुस्तान जानता है, उनको हैदराबाद के लोग भी जानते हैं। असेंबली के इलेक्शन में तो उनकी पार्टी का बुरा हाल हुआ है। उसी हैदराबाद में जहां वो कभी बेताज बादशाह होते थे, उसी हैदराबाद ने उनको जो है पलट दिया असेंबली के इलेक्शन में। क्यों? लोग उनको जानते हैं। हिंदुस्तान सबका है। The AIMIM Supremo, Mr. Asaduddin Owaisi, is back to doing what he does best. That is fearmongering, fearmongering and more fearmongering. He's back to deliberately and systematically and very methodically inciting hatred and indulging in hate speech, and in order to incite hatred or any kind of overt action by the Muslims against the Hindus. He's back to inciting hatred and creating Hindu-Muslim divide
based on religion and Islam between Muslims and and Hindus of India. Asaduddin Owaisi and his brother have mastered the art of hate speech, and their very identity and political relevance depends on incitement of hatred of Hindus by the Muslims. Mr. Owaisi seems to have made it a pattern and a habit to always somehow comment on a communal line. There is never a concept in terms of his party's colleagues, whether within his family, those who are there, or outside his family, for them to say anything that might be positive or development oriented. It almost seems a certainty that he or his party colleagues will speak only in something to create a sort of a division between Hindus and Muslims. And look at it in terms of the Ram Mandir. Muslim people are also joining it. It does not mean they are leaving their faith. They see themselves as Indians. They are celebrating the joy of Hindus, as Hindus celebrate the joys of Muslims or other communities. But Mr. Owaisi will always try to create a sort of a division, because that's his brand of politics. While addressing the crowd, he further added saying that Muslims should gather at mosque. Well, for their prayers, they are entitled to gather for their mosque. What is Mr. Owaisi saying? It is as if the Muslim brothers go to the mosques only because Mr. Owaisi is saying so. His context was different. What his context was that those who are in power, they are seeing your mosques with the greedy eyes. लालची नजरों से देख रहे हैं. बिल्कुल गलत बोल रहे हैं. क्या लालची नजरों से बोल रहे हैं? संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है. The constitution is clear. Hindus, Muslims, Christians, Buddhists, Parsis, Jews, all are equal before law. All have their own religious practices. But Mr. Owaisi, somehow to create some space for himself, is trying to go to the extreme and communalizing the issue. So you've heard a string of those reactions that have come in from the BJP versus Asaduddin Owaisi. Also, our colleague Aneri is joining us live for more insight into the timing and the entire context of that comment. You know, Aneri, many would say that Asaduddin Owaisi, the moment he makes a comment like this, he only helps the BJP. We haven't heard much yet from a lot of other IND alliance partners, but why did Asaduddin Owaisi make a comment like this, and is he also fighting for his own relevance, considering that neither is he a part of the NDA or the IND alliance for right now? Well, he says that he is fighting for the people of India and for Muslims, but now with this statement coming in, and the timing of this statement is definitely being questioned, because just ahead of the Ram Mandir Pran Pratishtha, which is all set to take place on the 22nd, now we see AIMIM chief Asaduddin Owaisi coming out and hitting out at the Bharatiya Janata Party, and also at the top leadership at the central government, where he indirectly hitting out at the BJP, says that we have already lost one mosque, so we need to protect all our mosques. And also he is asking the youth to come together at, we should not lose any of our mosques, we should stand strong, is what he has been asking people to do. But also at the same time, we have been seeing the timing of this Okay, we've just lost that line with Aneri, but she was giving us a larger insight into the timing of that particular comment. Remember, just coming days ahead of the big inauguration of the Ram Mandir. And this is Asaduddin Owaisi, who continues to fearmonger. He says this is an attempt to reduce mosques. He's also, in fact, what the BJP is saying, working on a typical line, which he does again and again. The attempt, he says, is also to polarize. And he also says in the context of the Babri Masjid that we've lost that mosque because of our negligence, clearly undermining the fact that this is a Supreme Court order that has been followed in letter and in spirit.